Assalamualaikum dear students. I hope you are all absolutely fine. May Allah bless you always. Let's start the lecture with the name of Allah who is most beneficent and the merciful. यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद और उसमें ऑब्जेक्टिव में हमारे पास पार्ट डी है। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशंस स्टैंड फॉर कि दरअसल मुखफ़फ़ात किन के लिए होते हैं। एब्रीविएशन होता है आ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। स्टार्ट में है हमारे पास यूएसए। यूएसए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आप अपने पास नोट करेंगे नोटबुक पे या बुक के ऊपर स्पेस है वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। यूके। यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। यूएई स्टैंड फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ICU stand for Intensive Care Unit. MBBS stand for Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. PhD stand for Doctor of Philosophy. MPhil stand for Master of Philosophy. PAF stand for Pakistan Air Force. NADRA stand for National Advanced Database Registration Authority. UN stand for United Nations. ISSB stand for Services Selection Board. WAPDA stand for Water and Power Development Authority. PCTB stand for Punjab Curriculum and Textbook Board. MNA stand for Member of National Assembly. MPA stand for Member of Provincial Assembly. IMF International Monetary Fund. WHO World Health Organization. WTO World Trade Organization. UNESCO United Nations Education and Scientific and Cultural Organization. UNICEF stand for United Nations International Children Emergency Fund. आपने सिर्फ ये एब्रीवेशन नोट करने और याद करने। ओके टिल दैट Allah Hafiz, stay home, stay safe.